good you people? Hope all of you are good, safe and sound at home. My name is Pratik and I welcome you to HARDEF Academy. And now let's come straight into the point. जैसे कि आप सबको पता है पिछले 17 to 16 आवर्स से सिर्फ एक ही बात चल रहा है, PUBG is banned. PUBG ban is trending on YouTube, trending on Twitter, हर जगह पे ट्रेंडिंग कर रहा है कि PUBG is banned in India. So इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट alternate games of PUBG, second part reason of ban of PUBG in India, and the third part is the good news for all the PUBG lovers. And the fourth part of the video is the income of PUBG Mobile from Indian gaming community and the share it loses after the announcement of PUBG ban in India. So let's come to the first part of the video, that the alternate games you may play. First one, Call of Duty, that is of 1.5 GB. It is available for Android and iOS in Play Store. You can play Free Fire. You can also play one of the coolest game, that is Last Island of Survive. इसमें क्या होता है, आपको खुद को घर बनाना होता है Minecraft की तरह, एंड आपको खुद को जंगल भी बनाना होता है, एंड देन यू हैव टू फाइट विद योर एनिमीज. तो ये सब कुछ गेम्स आप खेल सकते हो. Obviously these games are not intense as much as PUBG, but they may replace PUBG for few days. And the second part of the video, that is the reason of ban of PUBG in India. For those who don't know, PUBG is developed in South Korea. It is developed by a South Korean gaming company named as PUBG, but उसका मोबाइल वर्जन बनाया Tencent gaming company, a Chinese giant. इसीलिए सब चाइनीज ऐप को बैन चलते हुए PUBG को भी बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट, एज Tencent hold approximately 15% शेयर ऑफ PUBG. एंड another reason of banning of PUBG in India, ये शायद हो सकता है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है हमारे कंट्री का -23% डिक्रीज हुआ है. -23% is a huge number of decrease in GDP in the last few years. So इस मुद्दे को भटकाने के लिए भी शायद इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, क्योंकि आप पहले भी इस ऐप को बैन कर सकते थे टिकटॉक एंड शेयर इट के एंड या बाकी ऐप के साथ. एंड द गुड न्यूज फॉर ऑल दोज PUBG फैंस ओवर देयर इज PUBG शायद सिर्फ 7 to 14 डेज के लिए बैन होगा पिछले कुछ घंटों पे, एंड फिर से PUBG वापस आ जाएगा. क्योंकि अगर साउथ कोरियन कंपनी दैट PUBG इफ दे रिमूव ऑल द शेयर्स ऑफ Tencent गेमिंग कंपनी, तो चाइना का कोई हाथ नहीं रहेगा PUBG पे, एंड दैट्स हाउ इट मे कम वंस अगेन इन इंडिया. एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ. इंडिया इज PUBG मोबाइल्स बिगेस्ट मार्केट, अकाउंटिंग फॉर रफली 175 मिलियन इंस्टॉल्स. आप जस्ट इमेजिन 175 मिलियन इंस्टॉल्स, एंड इट्स नियरली 24% ऑफ टोटल इंस्टॉल ऑफ PUBG मोबाइल. सो इसीलिए PUBG दैट साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करेगा PUBG इंडियन कम्युनिटी को हटा के, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ PUBG प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया ओनली, अकाउंटिंग नियरली 24 to 25% ऑफ टोटल इंस्टॉल्स ऑफ PUBG मोबाइल. एंड नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द वन डे इनकम ऑफ PUBG, दैट इज द साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी फ्रॉम इंडियन PUBG कम्युनिटी ओनली. ये डेटा है मार्च 2019 का, नियर अबाउट 28 करोड़ एक दिन का. आप सोच सकते हो एक घंटे का 1 करोड़ से ज्यादा. इट is like huge. And now nearly 1.5 years later, in September 2020, with most of us stuck at home in this pandemic situation, now the number of PUBG players increased exponentially and they reached near about 35 to 40 crore each day. That is $4.66 million to $5.33 million each day from Indian PUBG community. Whew, that's huge, buddy. And let me come across you another data of Tencent gaming company, that is the Chinese company. It loses $14 billion market value after India bans PUBG mobile. And today only Tencent shares fell down 2%, that is on Thursday. इतना बड़ा घाटा शायद कोई कंपनी नहीं करेगा, तो इसीलिए PUBG दैट साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी शायद Tencent कंपनी को हटा के अपने सारे शेयर से PUBG may come in India once again. So सारे PUBG fans, don't uninstall your PUBG app, it may come. So that's it for today's video, guys. Hope all of you liked it, hope all of you enjoyed it, and hope all of you came across few data that I collected. So don't be sad because it may come, PUBG may come in India once again. Share with your friends, share with those who are big fan of PUBG. Even मैं भी PUBG का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, सीजन 2 से PUBG खेल रहा हूँ, and we all know in India PUBG is not a game. It's an emotion. For those who are new on this channel, let me inform you guys that we had started an initiative on this channel कि हम इस चैनल के पहले 1 मिलियन टोटल व्यूज के जितने भी YouTube रेवेन्यूज होंगे हम पूरा डोनेट करने वाले हैं IHCIF, that is Indian Healthcare Improvement Fund में, and to Hemkut Foundation for our COVID patients and for the poor families that are starving. तो आपके एक शेयर से कब किसी का एक कोविड पेशेंट का जान बच सकता है, एंड एक पुअर फैमिली को एक वक्त का खाना मिल सकता है. एंड बिलीव मी, आवर हेल्थ केयर सिस्टम इज रियली रनिंग एट वेरी लो नाउ. In the next one. Bye.